So you heard Charanjit Singh Channi, the Chief Minister of Punjab, who insists there is no security lapse. But let's now listen in to his predecessor, Captain Amrinder Singh, former Chief Minister of Punjab, who says there's a massive security lapse. Let's listen in. कैप्टन अमरिंदर सीएम फेस ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ नो दिस इज अ डिसीजन टू बी यूनाइटेड टेक तीनों पार्टियां इकट्ठे होकर फैसला करेंगी सर बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी अभी तक नहीं काफ़ी देर हो गया एफआईआर जमानत भी उनके कैंसिल हो चुके हैं लोकल लेवल को ऊपर हाई कोर्ट तक। ये कानूनी अवस्था है, ये मेरा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट डील करे, पुलिस डील करे और कानूनी उन्होंने वकील रिपोर्ट करें। मैं जी का बयान आया भी एक बदलने की भावना नाल जिहड़ी एफआईआर होया कि ये सरकार दे विच ही तुसीं मैं नहीं जानता इन्होंने मैनू पता है एको गल कि एक STF लाई सी मैं हरप्रीत सिद्धू की STF की रिपोर्ट एक बंद लिफाफे के हाई कोर्ट के रखी गई, ठीक है। दूसरा फिर हाई कोर्ट ने एक चट्टोपाध्याय की कमेटी बनाई, उन्होंने भी बंद लिफाफिया 2 चिट्ठियां उत्थे हाई कोर्ट रखिया ने। हुण वो हाले खुलिया नहीं, तुसीं पहला ही FIR कर दो, किस ते बेस कीता तुसीं अपना FIR? किसी चीज़ से तो बेस करना पड़ेगा। जब किसी दुनिया को पता नहीं कि वो है कि तो कौन करूँगा FIR और केड़े सैक्शन के तले करोगे जी। ये मेरा है, मैं किसी ड्रग वालियां दे हक च नहीं। 65,000 बंदे मैं फड़े ने मेरे वेले जब पीक ते सी 65,000 बंदे जेल दे विच जो इस नशा दे विच सीगे। जिस दिन मैं छड्डिया 18 सितंबर को 45,000 ते आ गए थे, क्योंकि कई बेल ले गए, कई कोर्टा ने छड्डते वगैरह कुछ। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬੰਦੇ से जो बिग फिश कहते हैं, बड़ी मच्छी। एक ਅਸੀਂ हांगकांग जेल ਦੇ ਵਿੱਚ है, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, और एक रोम ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। And the other big story here on India Today, Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur has said that the Ministry of Home Affairs is seeking all information from the Punjab government and hard action will be taken. Centre warns of tough action over security lapse. You're looking at those images of a massive security breach in Punjab when Prime Minister Narendra Modi was travelling to Ferozepur from Batinda. Anurag Thakur says big and tough action will be taken. Punjab government has been directed to submit a report to the Ministry of Home Affairs. That report would be studied, the SPG inputs would be studied, and then hard action would be taken. Let's listen in to Anurag Thakur. कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है, ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। कि देश की न्याय व्यवस्था सबको न्याय दिलाती है और इस तरह के जब कोई चूक होती है तो उसमें तो जो भी कदम उठाने होंगे वो उठाए जाएंगे। So on his way back to the airport, when the Prime Minister was coming to Delhi, he told airport staff, he told people at the airport, thank your Chief Minister, I'm going back to Delhi alive. Now, prayers are being held for the Prime Minister's long and healthy life in different parts of the country. These are images of Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath offering prayers at Baba Vishwanath Temple at Kashi. Prayers were held at various temples across the country, including in Madhya Pradesh, Assam, and other parts. There you're looking at images from different parts of the country. The Maha Mrityunjay mantra jap for the Prime Minister from Tripura to Madhya Pradesh to the national capital to Uttar Pradesh. Let's listen in to the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. इस प्रकार की अनैतिक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। और आज इसीलिए मैं काशी में बाबा भैरवनाथ जी से, बाबा विश्वनाथ जी से विशेष प्रार्थना करने और दर्शन पूजन करने के लिए भी आया।
So while the Punjab government has ordered an inquiry into these lapses, the BJP says that this wasn't just a lapse. They are saying that there was collusion on the part of the Punjab administration. They're asking, how did protesters get information about the Prime Minister's route? How did they know when and where to protest? Why were they not stopped? Why were senior officials of the Punjab government and the Chief Minister not available when the SPG was trying to raise them? This intense political battle has now escalated. A major breach in Prime Minister's security. For 20 long minutes, Prime Minister's cavalcade stuck on a flyover, just kilometers away from Pakistan border. Many things could have gone wrong, but fortunately, nothing did. Now a day later, BJP leaders across the country held pujas praying for the long life of Prime Minister Narendra Modi. From party workers to state chief ministers. To supporters in Prime Minister's own constituency of Varanasi. President Ramnath Kovind called on Prime Minister Modi to get a first-person account of what exactly happened. In the meeting at Rashtrapati Bhavan, President Kovind expressed his concerns about the serious lapse. Despite the sensitivity and gravity of the incident, the whole issue has taken a full political color. अगर कोई छिटपुट घटना हो जाती तो ये कांग्रेस जिसने पहले भी आतंकवाद के समय पंजाब को झोंका था, ये पंजाब को आग लगाने की साजिश करके रोटियां सेकना बंद करना चाहिए कांग्रेस को, ये उसकी प्रवृत्ति रही है। पंजाब बर्बाद करना ते इन्हां नूं पा दिओ, हो ते कल पता लग ही गया ਜਦੋਂ 500 ਬੰਦਾ 70000 ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 20000 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਛਾੜਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਸੱਚ ਲਿਆਤਾ ਸਾਹਮਣੇ। Some within the Congress even sought a judicial probe into the incident. If there has been a security breach, the entire chain of circumstances, the entire chain of events as they unfolded from Bathinda airport till that Ferozepur flyover need to be ascertained, it needs to be gone into. And those who are responsible for this breach, they must be held accountable, because ultimately this is not a subject of a political football. This concerns the security of the Prime Minister. Under fire, the Punjab government has rubbished claims of a conspiracy. पुलिस वालों ने ही इंटीमेट किया प्रदर्शनकारियों को, लीक हुई जानकारी प्रधानमंत्री के रूट की, तब जाकर के वो वहां पहुंचे। अरे 5 मिनट तो जाने में लगे, 5 मिनट में लीक हो गई और प्रदर्शनकारी आ गए। ये तो जो वहां रैली में जा रहे थे उनको रोकने के लिए 10 आदमी आ गए सड़क पे, और प्रधानमंत्री के काफिले को पहले पता चल गया, काफिला वापस ले लिया गया। इसमें जान को खतरा कहाँ हो गया? ये क्यों बात चलाई जा रही है कि मैं जान बचाकर आया हूं, जबकि वहां कोई था ही नहीं, खतरा ही नहीं था कोई। Amidst the explosive center-state blame game over the breach, the question arises: who was responsible for the lapse in security of the head of the Indian state? With Mausami Singh in Delhi, Kamaljit Sandhu, Ashok Singhal and Manjeet Sehgal in Punjab, Bureau Report, India Today. There are now a lot of videos in public domain, videos shot on mobile cameras, and just listen to this video where Bhartiya Kisan Union Krantikari netas are actually gloating about how they stole the Prime Minister's cavalcade, how people assembled. The question that is under investigation as of now is who leaked the information and what was the motive. By all accounts, the most serious security breach for a sitting Prime Minister in decades.
an incident that has triggered alarm bells in the PMO, and a firestorm in the political battlefield of Punjab. And there's another big reason why the dust won't be settling anytime soon. Leader of the farmer group that claimed responsibility for the breach, BKU Krantikari, has made a sensational revelation. ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ SSP ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲੱਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦਾ ਬਾਈ 에ਅਰ ਆਊਗਾ, ਹੈਲੀਪੈਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। Surjit Singh Phool claims that SSP of Ferozepur told them that the Prime Minister was going to travel by road. They were asked to leave, but they did not. Did no one from the Punjab police check whether the area was vacated or not? India Today has found that farmer protesters from nearby Misriwala and Pyarewala villages knew every movement of Prime Minister Modi's convoy. ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦੇ, ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾਗਾ। The seriousness of the situation can be gauged by the fact that the protesters knew that PM Modi's motorcade was moving on the Husseinwala road. ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ PM ਮੋਦੀ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਕਿ ਜੇ ਆ ਇਹ ਮੋਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਆ। Farmer unions who led big protests in Punjab's Ferozepur on Wednesday, blocking Prime Minister Narendra Modi's convoy, are now thumping their chests over a perceived victory. Bhartiya Kisan Union Krantikari chief Surjit Singh Phool has publicly thanked his supporters for gathering at the flyover and said that their agitation will continue. The farmer group has claimed responsibility for the agitation that led to the Prime Minister's convoy being blocked for 20 minutes on the way to Ferozepur. One of Surjit Singh's supporters also said he expressed thanks for successfully blocking the Prime Minister's sanitized route. ਮੋਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿੱਲ ਕੱਢੇ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਜਾਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਦੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। However, only a day later, BKU appears to have had a change of heart and has now said blocking the Prime Minister's convoy wasn't their intention. प्रधानमंत्री की रैली में लोग क्यों नहीं आए? किसान मजदूर प्रधानमंत्री की रैली का विरोध क्यों करते हैं? उन सब मुद्दों को डीरेल करने के लिए, अजय मिश्रा टैनी को बचाने के लिए जो किसानों के कातिल हैं वो प्रधानमंत्री के पास बैठते हैं। कांग्रेस के अंदर डर था, इतनी बड़ी रैली होने जा रही है तो कांग्रेस की चूल्हे तो हिली हुई थी और हिल जाएंगी, इसके डर से किसान की आड़ में एक बार फिर अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। The chest thumping and then softening has raised several more questions on the security breach and the failure of protocol down the chain in the state of Punjab. Bureau Report, India Today. A lot is being said that the Prime Minister's plan was very last minute, that he was supposed to fly, that nobody knew that he would go by road. India Today has accessed letters of the Punjab police that give details about how there had been a detailed discussion of a contingency plan, of inclement weather, of dharnas, and how there was a plan to move by road. In fact, sources are telling India Today that the advanced security liaison team of the SPG and the Punjab police had also done a dry run on the 4th of January. Much more on the story on the news track at 8 and India First at 10. But before that, let's listen in to Manish Tiwari of the Congress Party.
If there has been a security lapse, it should be investigated by a sitting judge of the High Court, and whosoever is responsible, that responsibility needs to be fixed. People need to be held accountable, because the security of the Prime Minister involves the nation as a whole. प्रधानमंत्री की सुरक्षा कोई राजनीतिक फुटबॉल नहीं है. प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है. The issue of safety of the Prime Minister of the country is extremely serious. As former Information and Broadcasting Minister Manish Tiwari said, there cannot be politics on such a serious issue. We will continue to track developments on the story very closely. A quick break. Nabila Jamal comes up next with the top 7 stories at 7. Stay with us.